So hello and namaste to all the Khyaal community members. This is Vikas, your host for today, or a very warm welcome to all of you uh, for today's session. आज को जो हमारा सेशन है ट्रांसफॉर्मेशनल थर्सडेज को हम ख्याल कम्युनिटी में योगा करते हैं हर थर्सडे को, और हम आज योगा करने वाले हैं वर्षा जी के साथ. शी इज द फाउंडर एंड of VS Wellness, and she's come to teach us a very specific yoga today. जैसे कि आपको पता है हम हर रोज सिंप्लीफाइड और इफेक्टिव एक्सरसाइज करते हैं जो हम प्रैक्टिकली यूज कर पाते हैं. तो आज हम देखने वाले हैं माइग्रेन्स और हेडेक्स जब हमें आते हैं तो उसके लिए योगा हमें कैसे मदद कर सकता है, और योगा से हम ये कैसे माइग्रेन और हेडेक को दूर कर सकते हैं. बहुत बार कभी कभी ऐसे होता है कि हमने कुछ गलत चीज खा ली तो हमारा पेट खराब होता है, तो उसके वजह से हमें हेडेक हो सकता है. या फिर कभी हम धूप में जाते हैं, या फिर हम कुछ बहुत सारा टीवी देखते हैं, तो अलग अलग रीजंस होते हैं. या कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो जिससे हमें हेडेक आता है. तो पता नहीं अगर ये योगा करने से वो लोग दूर चले जाएंगे और वो हेडेक चले जाएगा. बट हम आज एक्सप्लोर करते हैं वर्षा जी के साथ, और देखते हैं हम योगा से हेडेक और माइग्रेन को कैसे भगा सकते हैं. तो अ वेरी गुड इवनिंग वर्षा जी, and a warm welcome to the Khyaal community. And all our members are waiting and they're very excited to do today's yogas and asanas with you. Namaste, आप सभी को. It's so nice to see you all again. And hi Vikas. Thank you for the introduction on migraine and a little bit about us as well. Okay, so can we have more screens on? And if I can see you all practicing along with me. It's wonderful to see you all join in and get used to technology. हमारे generation से we're able to connect. Okay, all right. So we'll get started with today's session. First, we'll just start with a gentle awareness practice. So you can all sit in a comfortable posture. I'm right now sitting up close, so you cannot see my lower half, but I'm just keeping my palms facing upward. If you wish, you can just adopt the chin mudra. So connect your thumb to the forefinger gently, lightly. You don't need to press, and you don't need to stretch these other fingers. Just keep it very loose. Bilkul aise. Okay, just like that. Keep it palms facing upward. Sit tall. कमर सीधी होनी चाहिए. शोल्डर्स को थोड़ा सा आप उठा के रोल बैक करें ऐसे पीछे की ओर, तो ताकि आपका चेस्ट थोड़ा सा ऊपर आए. बिल्कुल अपना फेस रिलैक्स्ड रखेंगे. सारे फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड एंड लूजन्ड. और अपनी आंखों पे ध्यान दें. So just focusing on the eyes and the eyelids gently closed upon the eyeballs. And then feel the skin around the eyes. It's really soft. And then you can feel the slight bony structure or the eye socket. ऊपर हमारा eyebrow का bone होगा, brow bone. और नीचे it is lined by the cheekbone. और उसके और भी ऊपर है हमारा forehead. तो keep the forehead completely relaxed. आपका जो forehead का skin है वो side की तरफ जाना चाहिए, towards the temples of the eyes. तो as if अगर आप forehead से smile करेंगे तो जैसे lips side की ओर जाते हैं, वैसे the skin of the forehead should move to the sides. Now have a gentle smile on your lips as well. धीमे से मुस्कुराएं. और एक गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर. Take a deep breath in
होल्ड करें and exhale completely. Once again, breathe in deeply, hold, breathe out completely. And relax. Now gently you can become aware of your hands, fingertips, become aware of the feet. Slowly move your toes. पैरों की उंगलियों को धीमे से हिलाएं, हाथों की उंगलियों को भी हिलाएं. Move your fingers and gently bring your hands together in a Namaste Mudra at the chest center. Let's give thanks to the universe for bringing us all together on this online platform. We're grateful to the organizers, all of them who are present here, to their founders who come up with the idea of bringing this wonderful initiative. Let's thank the lords of yoga, the rishis, the sages who brought this amazing, ancient, it's a science and technology, yoga by itself. So we bow down to all of these ancient gurus. And finally, let's bow down to the Lord within each one of us. So you can bow the head down and then rub your palms, generate some heat. हाथों को मल के धीमे से अपनी आंखों के ऊपर रखें. Feel the darkness around the eyes. Let not any light pass in. And slowly release, draw in the energy. Okay. Namaste again, everyone. Welcome to today's class. Okay. So as you all know, some of you have joined in late. So today's class is about yoga for headaches and especially migraine. Okay, so thankfully, I have not experienced migraine, but then I have seen many people around me who have experienced migraine and they say कि बहुत ही खतरनाक होता है. So much so that one of the persons I met recently, he said when he had migraine, it was so devastating for him. इतना बुरा हाल होता था कि he used to feel I don't want to live anymore. He used to have suicidal tendencies. So for some people, it's a very, very bad splitting headache हो जाता है. तो टेक्निकली anatomically या medically देखते हैं कि migraine होता क्या है. They say it is a neurological disorder. तो हमारे nerves in the brain में कुछ neurological condition है ये, जिसकी वजह से recurring headache होता है. ऐसा नहीं कि एक बार हुआ किसी कारण, तो बार बार ये headache होने लगता है from moderate to high intensity. कभी कभी कम, कभी ज्यादा. And typically वो it affects only half of the head. तो आधा ही सर पे generally usually it affects, and also it can last for a few hours. किसी किसी को 2 घंटे से 2 दिन तक रहता है. In fact, जब मैं when I was doing my teacher training, so one of the students, she had joined the yoga teacher training only because of this. She said, I want to get rid of my migraine. So instead of just going to any class, I thought, let me study this, a modality of healing itself. Okay, and then now she is much better actually with regular practice of yoga. So when a person is under a migraine attack, इसको attack बोलते हैं. जैसे usually you have a heart attack or you have a stroke, which is also like an attack. Okay, so then the sufferer, the person who is suffering, or the patient may become extremely sensitive towards noise, जैसे light, noise. Okay, उन सब चीजों से उनको बहुत दिक्कत होने लगती है. So they cannot tolerate a regular घर का एनवायरनमेंट भी वो बेयर नहीं कर पाते, तो लॉक कर लेते हैं अपने आप को रूम में. तो माइग्रेन की वजह से बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. और इसके दूसरे सिम्टम्स क्या है? तो माइग्रेन की वजह से क्या क्या हो सकता है लोगों को? तो लोगों को वॉमिटिंग हो जाता है, नॉजिया या वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है, पेन एग्रीवेट हो जाता है और ज्यादा. एनी फिजिकल, कोई भी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने से उनको बहुत ज्यादा पेन या थकावट होने लगती है. ठीक है, तो नाउ अगर किसी को माइग्रेन है यहाँ पे या फिर कोई जानते हैं, तो देयर आर दैट द मेडिसिन्स दिए जाते हैं उसके लिए.
या फिर in rare cases they are asked to do a surgery etc. या फिर कोई antidepressants देते हैं उसके लिए, ठीक है. तो in yoga what are the benefits of doing yoga? तो योगा नॉर्मली करने से क्या होता है कि इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन जनरल, ठीक है. और दूसरा, जब हम लोग कोई भी योगासन करते हैं, वी ऑलवेज इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ ब्रीदिंग, सो मोर ऑक्सीजन गोज इनटू द बॉडी. ओके, हमारा बॉडी जो है ऑलरेडी इज 70% वाटर, और वाटर में काफी हद तक काफी मात्रा में ऑक्सीजन है, वी ऑल नो दैट, राइट. एंड दूसरा, द हेड एक्चुअली यूजेस अबाउट 80% ऑफ वाटर. Okay, so a lot more oxygen is utilized by the head because the brain is always constantly processing, activities, constantly burning energy, right? So there are some wonderful postures which are, you require very healing, restorative postures for migraine. Okay, अगर हम बहुत सारे ऐसे movement, dynamic movement postures भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग a very rhythmic breathing करते हैं migraine के लिए. Okay, and also we'll do some pranayam towards the end of the class. The other thing we can do is like a little bit of, I wouldn't say meditation, क्योंकि जब इतना headache हो रहा है, तो it's very impossible to do meditation. So we need to do a more, what do you say, focus our mind somewhere else. So the best place to focus our mind again is breathing. Okay, so because that is something we always have, whether you're traveling, whether you're somewhere, आप अपना breath छोड़ के घर पे तो नहीं जा सकते, right? So you always have that with you. So let's start today with breathing, with the asanas. So before we start with the asanas, we'll start with some gentle exercises for the neck and shoulder. Okay, because generally when we have stress, one of the main causes for headache is stress. Okay, and that stress हमेशा it accumulates here, neck region में और shoulder region में. Okay, तो अभी के लिए इतना theory we'll speak in between again once we're a little tired. ठीक है. So Vikas, I'm not looking at the comments right now. If there are any questions, I'll take it towards the end. Yes, definitely. अगर आपको कोई questions या doubts है, वो हम last के 10 मिनट में वर्षा जी लेंगे, और we will definitely address any queries that you have. Sorry. All right. So let's start. We'll start with some simple sitting postures. आप chair पे भी बैठ सकते हैं, या फिर आपके पास अगर mat है तो आप mat पे बैठ सकते हैं. Okay. So let's begin. First, we'll start with taking our hands upward. Inhale. Okay. Stretch the hands upward well. Elbows straight होने चाहिए. और look up. Inhale. Okay, exhale, just widen the hands, widen. पीछे की ओर लेके जाएं, जितना हो सके आप पीछे लेके जाएंगे, और try to hide the hands behind your back. Nice stretch behind the back. Okay, again bring the hands forward. Inhale, lift the hands up. So अगर आप chair पे बैठे हैं, तो you can move the hands by the sides of the chair and try to hold the backrest. Chair का जो backrest होता है, उसको आप side से ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं. And push yourself forward. Exhale. Once again, inhale up, look at the ceiling. Exhale, take the hands all the way back. Open the shoulder blades. Shoulders को पीछे की ओर धकलते हुए एक दूसरे की तरफ. Hold the chair or rest the hand back. And release. Relax. Okay. This will help us open the chest. All right. Now we'll do a few more postures just like this. So always when you take the hand up, you're going to look up at the ceiling. Abhi we'll join the hands. Namaste posture. Look up, look at the thumb tips. Exhale, place the hand on your knees. Hands on the knees and bend forward. Stay here for 2 seconds. And again, inhale up. Take deep inhalation. Exhale, place the hands on the knees and bend forward. अगर आप चेयर पे बैठे हैं, तो आप घुटनों को थोड़ा दूर रखें एक दूसरे से, ताकि गैप हो आपका पेट, वरना it will go on to the thighs. Very good. Once again, inhale, take the hands up, bend back, look up. If you want, you can join the hands in Namaste. Look at the thumbs.
एंड एक्सेल, हाथों को घुटनों पे रख के बेंड फॉरवर्ड. Stay there 2 seconds and gently lift up. Okay. Now we're going to do another posture. अगर आप, I think most of you are sitting on the chair, तो इसीलिए I'll just use a chair for reference, so it's easy for you to see what to do. तो मेरे पास छोटा बेंच है. Okay. I would like you to, फिर चेयर पे बैठे हैं तो आप पैर थोड़ा दूर रखें ऐसे. Okay. Widen the legs. ठीक है. और एक और बार इनहेल, हाथों को जोड़े और इस बार लॉक योर थंब, अपने अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर रखें. ठीक है. लॉक करेंगे थम्स को. इनहेल अप और हाथों को और ऊपर ऊपर धकेलते हुए, बिकॉज नाउ यू हैव अ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा और ऊपर पुश करना है. एक्सेल, एक हाथ या तो आप पीछे देखिए, या तो एक हाथ पीछे लेके जा सकते हैं कमर के पीछे एंड गो लाइक दिस, और यहाँ पे रख के यू कैन गो साइडवेज. Fully bend sideways, release, back. Again, join the hands, lock the thumbs. Inhale, lift up, lengthen the body. यहाँ से ऊपर खींचते हुए पूरा lengthen करना है. Look up. Exhale again. हाथ को या तो पीछे लेके जा सकते हो दूसरे तरफ, या फिर you can keep it on the thighs and exhale. Okay, we'll repeat this. थोड़ा सा fast करेंगे हम लोग. ठीक है. So we'll do all the three. Just follow along with. Okay. What this will do is it will help us open up the lungs. ठीक है. तो हमारी lung capacity को ये increase करेगा, और जितनी मात्रा में हमारी ऑक्सीजन absorb होगी बॉडी में, it will increase the rate of that oxygenation. Okay, let's start. Inhale, hands go up. First exercise. Exhale, take the hands back, 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 and hold back. Once again, inhale, up, look up, exhale, back. Next, again, continue. Inhale, up, spread the legs, exhale, hands on the knees and bend forward. Once again, inhale, up, look up, exhale, hands on the knees and push down. And the next one, inhale, up, and hands behind your back or forward here and to the side. Exhale. Once again, inhale up, exhale to the opposite side. One last time, inhale up. I'm keeping my right hand down and exhale. And one last, inhale up to the left, exhale. Release and relax. Now you can keep your feet together या फिर knees together. Okay. So next exercise होगा थोड़ा सा twisting exercise. So we will also involve the neck. So you're gonna just go inhale up, exhale down, opposite hand on the opposite knee, ऐसे twist पीछे की तरफ देखते हुए. Very good. हाथ को नीचे रखें, भल्ला जी, भाटिया जी, twist back. Very good. Inhale up and exhale to the opposite side. Okay, ऐसे continue करेंगे 4 बार लगातार. ठीक है. Inhale up, exhale to your right. Inhale up, exhale to the left. Again, inhale up to the right. Exhale, inhale to the left. तो जब भी हाथ ऊपर करेंगे तो inhale, हाथ नीचे रख के घूमेंगे तो exhale. फिर से हाथ ऊपर, inhale, and opposite side, exhale. Release and relax. Okay. Quickly, we will do some neck exercises. So I'm just keeping my hands here. ठीक है. तो हाथों को ऐसे लंबा रखें so that your shoulders are pushed down. वरना हाथ ऐसे रखते हैं तो कभी-कभी shoulder उठ जाता है ऊपर. ठीक है. So I'm keeping the hands down. Okay, and let's start. So we'll just start with ऐसे semi circle. मतलब मैं सर को नीचे करूंगी and I'm going to turn the head towards the right side. Go back. Turn again. Come back here. Semi circle. सिर्फ आधा circle करेंगे on the right.
Continue. 3 more. 2 more. Push the head back and forward. Very good. And last one. Back and forward. Okay. So obviously अभी दूसरी तरफ करेंगे. So drop your head down, moving towards the left shoulder and back. And again come back, left shoulder and forward. 1. So 2. Go back and forward. Normal breathing ekdam. 3. Move back and forward. 4. Move back and forward. Last one. 5. Move back and forward. Okay, very good. Okay. Interlock your hands, Abhi. Just interlock the hands. We're going to do some very simple sort of, head massage and neck movement. Okay, so you're going to place your hands on the forehead. Okay, and gently push back. So जब push back कर रहे हैं, तो आप पूरा अपने head को देखें. You should not push your whole chest back along with the head. ठीक है? चिन को ऊपर करते हुए, अपने चिन को ऊपर करते हुए आपको हेड को पीछे करना और फिर apply a little pressure on the forehead and allow it to push down. आप देख सकते हैं कि मेरी कमर almost सीधी है. Very nice. Extend, widen the elbows. Nice. Armpits open होने चाहिए. Release, relax. ठीक है, फिर से इंटरलॉक योर हैंड्स. अभी सिंपल पीछे की ओर हाथ रखेंगे और अपने चिन को पुश, एज इन चिन को जो है ना आपको अंदर की ओर लेना है. ठीक है, एंड पुश डाउन. होल्ड हियर. वेरी वेरी सिंपल अगेन. अभी थोड़ा सा आपको बैक ऑफ द नेक में स्ट्रेच लाना है, तो इसलिए आप थोड़ा और दबाएंगे. हाथों को थोड़ा गर्दन की ओर नीचे रखें और फिर से दबाएं. ओके, रिलीज, रिलैक्स. साइडवेज करेंगे. ओके, तो राइट हैंड, लिफ्ट अप योर राइट हैंड एवरीवन. लेफ्ट साइड की ओर रखना है आपको, लेफ्ट कनपट्टी या लेफ्ट टेम्पल की ओर. ओके, एंड पुश डाउन. फिर से राइट की ओर खींचना है, टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर खींचना है. अच्छा, और थोड़ा सा प्रेशर लगाएं. ओके, नाउ जस्ट वॉच मी. वी गोइंग टू डू वन मोर थिंग. इसी में ऐड करेंगे. फिर से मैं राइट हैंड उठाऊंगी, सेम चीज करूंगी. दिखने में आपको सेम लगेगा, लेकिन मैं क्या करूंगी कि हाथ इस तरफ पुश कर रहा होगा और मेरा सर जो है इस तरफ पुश कर रहा है. तो आई एम ट्राइंग टू पुश माई हेड टू मेक इट स्ट्रेट, लेकिन हाथ इसको खींच रहा है, तो देयर विल बी अ अपोजिंग टेंशन. तो यहाँ पे आपका जो नेक होगा, तो उसको यू विल गेट अ लिटिल स्ट्रेंथनिंग. जस्ट ट्राई इट. हाथ नीचे खींच रहा है और गर्दन जो है सर ऊपर स्ट्रेट होने का कोशिश कर रहा है. Can you feel that equal and opposite force? It feels very nice on the neck. Release, relax. Okay. On the opposite side, left hand ऊपर और right side कान के ऊपर. Okay. First time you will just bend down. No pressure of the head. You will just bend it down. Okay. इस opposite shoulder को नीचे रखना है आपको. Okay. Now come back. Now we're going to do the same thing, same action, लेकिन head is moving away. So head is trying to come back to becoming straight और आपका हाथ नीचे खींच रहा है, सर इस तरफ खींचना चाहिए. Can you all feel that? Give me a thumbs up. Awesome, very good. Thank you. Release, relax. Okay. फिर अभी right now just move your head in any direction which feels good. तो आपका body आपको खुद guide करेगा कि किस तरह से आपको रिलीज कर रहा है आपका हेड. Okay, थोड़े लोग ऐसे S shape, you can draw S shape with the chin, infinity shape. फिर रिवर्स कर सकते हैं. Okay, और फिर
एंड में वी कैन डू दिस स्लाइट पीकॉक मूवमेंट ऑफ द हेड, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रोट्रैक्ट और रिट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट रिट्रैक्ट, sorry my dog is here. Okay, so protract again, retract, protract, ठीक है, release, relax. Okay, so now we're done enough with the neck. We can do a little bit of seated cat cow posture. Okay, so as we know कि हमारा जो spine है that is very very closely related to the brain and the head, ठीक है, in fact it's a part of the same central nervous system. So because the migraine is a neurological disorder, so usually the headache or whatever उसकी वजह से why people get physical body pain is because it travels down through the spine, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, चेयर पे बैठे हुए, फीट शुड बी स्लाइटली अपार्ट, हिप विड्थ अपार्ट, और फिर मैं बॉडी को पुश करूंगी आगे, इनहेल हेड अप, एक्सहेल स्पाइन बैक राउंडेड, chin to the chest, inhale push the chest forward and head up, exhale round the spine, chin to the chest, inhale करते हुए छाती आगे और सर ऊपर, एक्सहेल करते हुए स्पाइन को बेंड करे, कर्व करे और चिन को चेस्ट की तरफ. डू दैट फ्यू मोर टाइम्स. नाउ विल डू इट अ लिटिल फास्टर दिस एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे कि प्राणायाम में कैसे वी डू कपालभाति प्राणायाम एक्सेट्रा, लिटिल फास्ट, थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग. तो ऐसे दिखेगा, फॉर एग्जांपल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. ओके, लेट्स कंटिन्यू. विल ट्राई टू डू 8 काउंट्स. ओके, स्टार्ट. Let's go. Inhale forward, exhale back. 2, inhale forward, exhale back. 3, inhale forward, exhale back. 4, inhale forward, exhale back. Take a break and then we'll do 4 more counts. Very good. सभी लोग आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं. Okay, एक और बात मैं बता दूं. For example, some of you क्या हो रहा है, आप एक बार मेरी तरफ देखें, especially मेरे कंधों के ऊपर ध्यान दें. तो थोड़े लोग जो सब सामने जा रहे हैं तो कंधे ऐसे ऊपर कानों की तरफ जा रहे हैं. तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज कैन यू सी द शोल्डर्स आर क्राउचिंग लाइक दिस. ठीक है, वो तो शोल्डर में टेंशन हो जाता है. तो जब आप सामने जाते हैं तो शोल्डर को नीचे रखें, एकदम कानों से दूर. ठीक है, और जब वापस भी आते हैं तो शोल्डर्स कान से दूर होने चाहिए. दे शुड ऑलवेज कीप अ गैप. ओके, लेट्स कंटिन्यू 4 more rounds. Start. Inhale, push forward, shoulders down. Exhale, push back. Inhale and exhale. Deeper breaths. Inhale, exhale. Very good. Inhale and exhale. Release and relax. Okay. So let's just do a little swinging movement of the arms. आप जैसे ही बैठे हैं, you can just swing your hands. अगर आपका chair यहाँ पे पीछे हाथ hurt करेगा, then you can stand up and do it. Just swing. एक बार right hand up, एक बार left hand up. Just swing the arms. Loosen fully. Just throw your hands back. एकदम अपने हाथों को बिल्कुल loose रखेंगे और पीछे की ओर एकदम just push back. Like how children just do a let go completely. Very good. Very good. Release, relax. Okay, one last exercise. Already we have done a side bend. Okay, but this will do it's a little more challenging. ठीक है, थोड़ा और अपने आप को challenge करेंगे. तो interlock your hands फिर से. ठीक है, हाथों को ऊपर, so palms को ऊपर face करते हुए. ठीक है, now exhaling, bend to the side. Very good. अपने पूरे बॉडी को करना है, सिर्फ नॉट ओनली सो मच. ओके, एक ही साइड पे रहे, जस्ट बी ऑन वन साइड. और फिर से थोड़ा और खुद को चैलेंज करते हुए बेंड दी एल्बोस. ठीक है, दोबारा स्ट्रेच मोर एंड बेंड मोर. स्ट्रेच, होल्ड इट हियर, एवरीबॉडी होल्ड, कम ऑन, यू आर डूइंग वेरी वेल. 5 seconds. 5, 4. सब लोग अपने हाथों को कानों के पीछे ले जाएं, कानों के आगे नहीं. 3, 2, 1. Very good. Release, come back to center and down.
Very good. Okay, let's go for the other side. Again, inhale up. Very nice. Exhale to the side. Very nice. Continue. Hold it there. कानों के पीछे एकदम 5. Bend again and stretch again. Very good. थोड़े लोग हैं जो बिल्कुल doing it very well. Zila ji, Bhatia ji, Deepak Wadhwa, Vijay Matthews, come back, please. Nalini Mohan ji, very nice. Bernie, all of you doing so well. Rupali ji, wonderful. Okay, I can, there are so many other names I can see on the screen, but there are few I can speak, but I wish I can interact with all of you. Okay, so next we're going to move on towards a few asanas and then we'll do a little bit of pranayama. Okay, now some of the asanas which are very helpful. तो अगर आपके पास आसपास जो मैं चीजें दिखा रही हूँ अगर है आपके पास तो चलेगा वरना it's okay, you can just watch it and बाद में you're lucky that they are all recording these sessions for you and it's uploaded on YouTube, तो आप बाद में कभी भी ये सेशंस देख सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि this migraine is a very they give very restorative poses, मतलब restful postures जो नॉर्मल हम लोग योगा में करते हैं जरूरी नहीं है कि वैसे ही करना है. आप काफी सारे ऐसे सपोर्ट पिलोज ये सब लेके कर सकते हैं. ठीक है, तो I'm going to just show you a few postures with support and without support. I will show you both. तो मेरे पास यहाँ पे ये एक bolster है योगा का, but इसके बदले you can even use 2 pillows. ठीक है, तो the first posture is like this. अगर if you have a bed or something sofa next to you, you can try it also. So I'm just sitting down. Okay, जो लोग पूरा बैठ नहीं पाते हैं they can just come to this position on the bed. ठीक है, और आगे की ओर ऐसे you have to just bend over for balasana. Okay, and normally जो है तो ऐसे हमको बैठना चाहिए, but किसी किसी को अगर दिक्कत हो रही है ऐसे बैठने में they can put a pillow here and they can stay. Okay, now if we don't have this much flexibility, then what you can do is you can use a pillow like this or you can use 1 or 2 pillows. ठीक है, and then you can just rest like this. आप चाहे तो यहाँ पे एक और छोटा पिलो लगा सकते हैं ताकि your head is slightly elevated. Okay, this is balasana posture. Okay, the next posture you can do, okay, is sitting. So you will just sit in sukhasana. All right, sit in sukhasana and you can rest the head similarly like this. Okay, those of you who are sitting on the chair, if you have a table in front of you also you can do it. The whole idea is that whenever you rest your physical mind or the brain, right, when you let your forehead rest, then the mind also feels restful. ठीक है, तो just like this. या फिर आप अगर और आपको ऊंचा करना है तो you can have another pillow above this and you can rest like this. Okay, so ये actually बहुत एक natural चीज है जो हम लोग हम इंसान करते हैं. जो फॉर एग्जाम्पल जब भी आपको कभी हेडेक हुआ है या टेंशन हुआ है तो हम लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, we just sit like this, don't we, all of us? Yes, right? Why do we do that? Because our tendency, the human intelligence is already there कि when you rest the forehead you will थोड़ा सा आराम मिलता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है. Okay, and another reason is that our hands have a very the chakras here, the energy centers here on the fingertips and your palm, they have healing energy. Okay, इसीलिए हम लोग जब किसी को अगर कुछ समझाना है तो you will put your hand on them, hey, you know what, everything will be okay, सब कुछ ठीक हो जाएगा, right? So it's a way of healing when you touch somebody with the hands, especially when जब वो भाव होता है, then it definitely works. Okay, I'm going to show you some standing postures also. Okay, one more way to reduce headache is to increase the blood supply to the head region. So इसके लिए भी I'm going to show you a traditional posture and a simple posture. आप लोग सब खड़े हो सकते हैं, मेरे साथ कर सकते हैं ये posture. इसका नाम है प्रसारित पादोत्तानासन. So you just have to spread your legs 3 to 3.5 feet apart.
ठीक है। आपके सामने अगर सोफा है या चेयर है तो आप उस पे सर रख सकते हैं। आई विल शो यू द ट्रेडिशनल पोस्चर। तो आपको हाथ आइडियली नीचे रख के सर ऐसे नीचे करना होता है, बट क्योंकि in most of us in this age we may not be able to do, you can keep a chair in front and you can just keep your hand here and try to bend the elbow. See, I'm bending the elbow and rest the head. तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, अभी मैं आपको साइड से दिखाऊंगी कि अगर आप ऐसे करेंगे, देखिए मैंने अपना बैक राउंड कर लिया है, तो ये गलत होगा। गलत मतलब इससे आपको बैक पेन बढ़ सकता है, जिसको बैक पेन है। लेकिन अगर आप ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, देखिए फ्लैट बैक, कीप द हेड अप एंड कीप गोइंग डाउन। अगर ऐसे जाएंगे तो बैक पेन कभी नहीं होगा एंड इट विल elongate the backbone and there will be good flow of blood to the head. तो इस आसन का नाम है प्रसारित पादोत्तानासन, वेरी यूजफुल आसन इन हेडेक्स। ओके, ऐसा ही सिमिलर एक आसन है जो उत्तानासन। आपने लोगों को सूर्य नमस्कार करते हुए देखा होगा, या फिर आप लोगों ने भी किया होगा बचपन में या फिर इन योर younger days. Okay, उसमें the first asan is inhale, hands go up, hasta uttanasan, and the second asan is uttanasan या पाद हस्तासन, hands next to the feet and down. Now जाहिर है कि अभी हम शायद काफी लोग इतना नीचे तक नहीं टच कर पाते हैं, तो what can we do? You can hold your hands below the knee or behind the your calf muscle. पैर के पीछे होल्ड करके ऐसे नीचे जा सकते हैं, या फिर से you can use a chair. तो start by bending forward like this, then you can rest elbow. देखिए अगर इतना हो सकता है तो ठीक है। धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, स्पेशली जिनको अगर कमर दर्द नहीं है तो ये आप इजीली कर पाएंगे। आप ऐसे पकड़ के घुटनों को पीछे से, ठीक है, या फिर उसके नीचे, फिर एल्बोस को ऐसे वाइड करना है, ठीक है, और नीचे 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 खुद को खींचना है। ये गैप जो है हमको कम करना है, इतना रहेगा शुरू में। तो धीरे धीरे आप घुटनों को मोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घुटनों को मोड़ते हुए जाएं नीचे, और उसके बाद सर को नीचे ही रखेंगे लेकिन हिप्स को ऊपर करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। ओके, इसका नाम है उत्तानासन, ठीक है। इससे भी अगर आप फिजिकली ही देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो होगा हेड की तरफ, और वहां पे आपको एटलीस्ट 3 to 4 ब्रेथ्स तक रहना है। इनहेल एक्सहेल अबाउट 4 ब्रेथ्स, ठीक है। तो वी गोना डू सम मोर आसनास फॉर विच यू विल एक्चुअली प्रेफरेबली नीड द वॉल, ठीक है। अगर एक दीवार है, बेड पे भी आप ये आसन कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोना शो यू दीज आसनास। I'll turn my camera a little bit. Okay, तो अभी शायद आप ये आसन ना कर पाए, बट आप डेफिनेटली बाद में you can give it a try. So I'm going to move close towards the wall. तो most लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वॉल से इतना दूर रहेंगे and then they will go up like this. तो अभी आपको दिख रहा है कितना डिस्टेंस है मेरे हिप के बीच में और वॉल के बीच में। तो इसके बदले हमको क्या करना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे वॉल के पास बैठ जाना चाहिए, हिप्स को वॉल पे टच करना चाहिए, और फिर नीचे लेट के पैर ऊपर करने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पूरा पैर वॉल के ऊपर लगा रहेगा। इसको बोलते हैं विपरीत करनी। तो इससे भी होगा रिवर्स ब्लड फ्लो, and in general this is a very relaxing posture, restorative posture. इसमें आपके लोअर बैक को भी काफी आराम मिलेगा, और हेड तो वैसे ही रेस्टेड है। So this posture is very very useful. अगर if anybody is flexible and if they have a little bit of good strength, थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपने घुटने प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर उठा के, ये हो गया विपरीत करनी, ठीक है। तो ऐसे अगर रखेंगे तो विपरीत करनी होगा। और अगर आप सपोर्ट, हाथ का सपोर्ट नहीं भी देना चाहे, तो यहाँ पे थोड़े से किसी को बोल सकते हैं कि थोड़े से पिलोज रख दे,
तो ऐसे आप अपना रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा एलिवेटेड, ठीक है। इवन दिस पोस्चर इज वेरी गुड फॉर माइग्रेन, ठीक है। और इसके अलावा इफ यू वांट टू डू अ मिड ग्राउंड, तो मान लीजिए कि ये मेरा सोफा है और ये मेरा, या फिर दिस इज अ चेयर, ओके। सो इट शुड बी अ लिटिल मोर हायर, जैसे सोफा का हाइट थोड़ा और ऊंचा होता है, सो यू कैन कीप योर लेग्स ऑन द सोफा लाइक दिस, legs on the sofa, fully rested, and rest your hands. This is also a good posture. अभी जब when you are in this posture, जब आप इस posture में बैठे हैं, ठीक है, लेटे हैं, तो then I will tell you a few pranayam you can practice, ठीक है। तो अभी फिलहाल वो प्राणायाम हम लोग आप या तो लेट के कर सकते हैं, या फिर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। तो ये थोड़े से प्राणायाम मैं आपको बता देती हूँ। Okay. All right. पहला जो प्राणायाम है, इसको हम बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम या उज्जयी ब्रेथ। दिस इज कॉल्ड द विक्टोरियस ब्रेथ, ठीक है। तो इस ब्रेथ में क्या है कि आपको आपके थ्रोट में आपको एक साउंड सुनाई देना चाहिए एज यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस प्राणायाम ऑलरेडी? Some of you know it already. Okay, very good. So we'll just practice it together once. Okay, थोड़ा सा ट्रिकी है जब तक ये सीख पाए आप। तो इमेजिन करें कि you want to, आप कुछ धीमे से बोल रहे हैं, जैसे विस्पर, you're whispering your name। आप अपना खुद का नाम ऐसे विस्पर में बोले, वर्षा के बदले में बोलूंगी वर्षा, ठीक है, विस्पर में, ठीक है। तो आपको गले में वो साउंड महसूस होना चाहिए, ठीक है। या फिर यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। So you can imagine this is a glass, ठीक है। अगर ये शीशा है तो शीशे के ऊपर हमको अगर मिस्ट करना है, जैसे अपना चश्मा क्लीन करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग सांस छोड़ के उसको क्लीन करते हैं, राइट। सो लाइक दैट यू वांट टू जस्ट डू दैट साउंड। और ये करते हुए आपको यहाँ पे जो महसूस हो रहा है गले में, उसके ऊपर ध्यान दें, राइट। यू कैन फील द ब्रेथ यहाँ पे, करेक्ट। सो दैट ब्रेथ, ओके, यू नीड टू फील इट। वो जो थोड़ा सा फ्रिक्शन है, हल्का सा जो फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो उसको आपको और महसूस करना है एज यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो इस ब्रेथ में क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा साउंड करते हैं, साउंड बनाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम ब्रीदिंग इन, अभी ऑब्वियसली आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, बट आई विल फोकस हियर एंड मेक दैट साउंड। तो यू विल फील जो एयर पास हो रहा है ऐसे नेसल कैविटी में, और यहाँ पे जब जा रहा है तो उसका आप साउंड थोड़ा सा गहरा साउंड बनाएंगे। एंड देन व्हाइल ब्रीदिंग आउट ऑल्सो, okay, it's very common कि when somebody is in a very good sleep, right, so you can hear this sound. In fact अगर बच्चे भी, छोटे बच्चे जो हैं जब सो रहे होते हैं, तो if you go close to them you can hear this sound, right. So I'm not talking about खर्राटे मारना बहुत जोर से हो जाता है, but ये बहुत एक soft sound होता है, okay. Most of you can relate if you can think of small kids when they sleep, ठीक है। So they have a very natural ujjayi breath they're doing all the time. तो अभी इसको और अच्छे से महसूस करने के लिए what we'll do is we will close our ears, बस ऐसे gently, ठीक है। and you will do that गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर, ठीक है। और ये करते हुए तो आपको बहुत जोर से नहीं करना है कि यहाँ पे दर्द होने लगे, आपको बहुत धीमे से करना है। तो ये आफ्टर यू डू इट रिदमिकली, मतलब कंटिन्यूअस जब आप करते जाएंगे तो दिस विल साउंड लाइक द वेव्स ऑफ द ओशन। तो लहरों की तरह, जो लहरों का आवाज आएगा तो वैसा आवाज आएगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी कामिंग ब्यूटिफुल प्रैक्टिस, ठीक है। आई वांट एवरीबॉडी टू ट्राई दिस। सो प्लीज क्लोज योर आईज, क्लोज योर ईयर्स, और अपने आप से खुद से ट्राई करें 3 breaths, 3 cycles. Give it a try.
Okay. Could you all feel that? Yes or no? Was it very relaxing? If it's no, also you can tell me. Good. Okay, very nice. So like this, we'll also learn one more pranayam. Okay. Um, this is called Viloma pranayam. Okay. In Viloma pranayam, दो तरह के विलोमा प्राणायाम होते हैं, अंतर विलोमा और बाह्य विलोमा. अंतर मतलब जब अंदर ले रहे हैं, बाह्य मतलब जब बाहर छोड़ रहे हैं. तो इस प्राणायाम का ये सिग्निफिकेंस है कि इसको हम ब्रेथ को ब्रेक करेंगे पार्ट बाय पार्ट. जैसे एक इनहेलेशन, ऐसे लंबा इनहेलेशन जैसे लेते हैं, ऐसे नहीं होगा. तो इनहेलेशन को ब्रेक करेंगे, जैसे कि इनहेल, फिर इनहेल, फिर इनहेल. ठीक है. तो थोड़ा सा इनहेल, ठीक है, फिर एक्सहेल, बस छोड़ना है उसको. तो उसी वो 100% इनहेलेशन को आपको 33% ऐसे ब्रेक करना है, हाफ हाफ हाफ. ठीक है. 1/3 1/3. तो लेट्स ट्राई. इसको कहते हैं अंतर विलोमा. ठीक है. तो नाउ विल ब्रीद इन. सो आई विल से ब्रीद इन 1/3, दोबारा ब्रीद इन, once again breathe in fully, hold, and slowly exhale continuously and smoothly. Very good. Okay, दोबारा करेंगे. Okay, inhale, 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 and exhale slowly and completely. No? So what are we doing here? It's like, you know, आप ऑर्केस्ट्रा में देखा है कि हाउ द ऑर्केस्ट्रेटर, और वहाँ बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं और वो ऐसे सबको ऐसे ऐसे करता रहता है, एंड एवरीबडी प्लेज अकॉर्डिंगली, राइट? सो यू आर योर ओन ऑर्केस्ट्रा मास्टर, and you are the orchestra master of your own breath. So you can decide the rhythm of your breath. Okay, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं, right? Okay, it's like how it's beautiful how the nature and our body is very very similar. तो हम लोग क्या करते हैं, जो विंड है या फिर जो हवा है, तो उसको भी you apply it in different ways, right? जैसे windmill में we you put the windmill on a very high place where there is more wind, और वहां पे वो रोटेट होके एनर्जी जनरेट करता है, राइट? और you use different winds, जैसे कभी कभी फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं. इंडस्ट्रीज में हाई प्रेशर हवा छोड़ के कुछ चीज को अगर कंप्रेस करना है किसी के लिए, तो फैन यूज करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, एग्जॉस्ट के लिए यूज करते हैं, राइट? सो यूज द विंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन. सो वैसे ही हमारे बॉडी में गॉड हैज गिवन अस दिस प्राणायाम, जो ब्रेथ है हमारे साथ हमेशा रहता है. तो यू नो यू कैन अप्लाई इट फॉर डिफरेंट हीलिंग कैपेबिलिटीज. ठीक है. तो अभी देखते हैं दूसरा तरह का विलोमा प्राणायाम, विच इज बाह्य विलोमा. तो अंतर विलोमा अभी हमने किया, विच मीन्स इनहेलेशन में हमने ब्रेक किया उसको. तो अभी बाह्य विलोमा में इनहेलेशन नॉर्मल रहेगा, सो डीप इनहेलेशन, फिर एक्सहेल करेंगे 1/3, फिर कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन 1/3, फिर फुल एक्सहेलेशन. ओके, let's start. So deep inhalation. Now exhale controlled halfway. Again exhale thoda sa, and again exhale completely. Correct? Let's try that once more. Deep inhalation and thoda sa exhale, फिर से exhale, and दोबारा exhale completely. Okay, so these are two pranayams which can really help you with migraine. Okay, so I will just repeat quickly, recap. The first one is the Ujjayi pranayam, जिसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा साउंड महसूस हो रहा था, और अगर आप ऐसे कान बंद करके करेंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस टू स्टार्ट योर डे विद. बोलते हैं कि जो उज्जयी प्राणायाम से अगर हम अपना दिन का शुरुआत करें तो आवर डे विल गो विक्टोरियस. ओके, तो उसका नाम ही है उज्जयी. और ये विलोमा प्राणायाम जो है, it again helps you take in more oxygen and release and let go of more toxins also. Okay, so these were the two pranayams. And a general rule, okay, for headaches, migraine, actually for any kind of well-being, actually for any kind of disease, this is a golden rule.
कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमको पूरा सांस बाहर छोड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि सांस तो लेंगे अंदर, लेकिन जब सांस बाहर छोड़ना है तो वी विल लीव ओनली लाइक 60%, 70%। तो उसमें क्या हो जाएगा कि 30% जो है पुराना एयर अंदर है, तो स्टेल एयर अंदर होगा। ठीक है, घर पे हम क्या करते हैं, पुराना खाना होता है तो बहुत पुराना हो गया, खराब हो गया तो हटाना पड़ता है, करेक्ट, राइट, और यू टू गिव इट अवे और समथिंग। तो लेकिन ब्रेथ व्हाट वी डू, स्टेल ब्रेथ, उसके ऊपर दोबारा सांस लेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा विद द ओल्ड ब्रेथ, अगेन वी ब्रीथ आउट। तो वो पूर्ण तरीके से ब्रीदिंग नहीं हो पाता है। ओके, so you take full breath in, and that's why I always say breathe out completely. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करें, we'll just try this experiment. Okay, so I want you to just breathe in, breathe out, again breathe in, breathe out, once more breathe in and breathe out. ठीक है, so this was normal breathing. Now we'll try to breathe out more fully, completely. ठीक है, और तब आप देखिएगा कि आपका इनहेलेशन ऑटोमेटिकली कैसे डीप हो जाता है। क्या होगा कि आप अगर पूरा एम्प्टी एयर, लंग्स एम्प्टी करेंगे ना पूरी तरीके से, तो जब सांस अंदर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गहरी सांस हो जाएगी अंदर। जब अगर कम जगह है, मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, ये वाटर जैसे टैंक है, तो टैंक अगर इतना भरा है तो इतनी ही जगह है ना भरने के लिए, तो इतना ही भर पाएगा फिर अच्छा फ्रेश एयर। ये तो पुराना एयर नीचे रह जाएगा, करेक्ट, इट्स सिंपल, लाइक थिंक लाइक दैट। सो इफ यू एम्प्टी इट फुल्ली, ऑटोमेटिकली इन ब्रेथ जो है और जगह लेगा और फुल भरे। So let's start. Proper breathing, deep inhalation, and now I want you to exhale completely. पूरे अपने lungs को empty करें. Inhale, automatically गहरा होगा. Once again, exhale completely, fully. फिर से breathe in and exhale, exhale, exhale fully, completely. Release. कुछ फर्क लगा? थोड़ा बहुत? ओके, तो ये हमारी ब्रेथ का पैटर्न नॉर्मली होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि दिन भर तो हम लोग काम में बिजी हो जाते हैं और ये वो, तो सांस पे कौन ध्यान देगा, और सांस पे ध्यान दे तो टीवी कौन देखेगा और बच्चों को कौन देखेगा, काम कौन करेगा, तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमको कि यू हैव टू प्रैक्टिस प्राणायाम। 10 मिनट 20 मिनट अगर हम लोग दिन में प्राणायाम करें, स्पेशली सुबह सुबह अगर करते हैं, तो बॉडी को मसल मेमोरी हो जाता है कि हाँ ऐसे ब्रीदिंग करेक्ट है। So then you can breathe well. And one of the most important things, okay, it's almost time, I'll keep some time for question answers. So if our breath is regulated, ठीक है, तो जब स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है या फिर कुछ एंग्जाइटी होता है, तब हमारा सांस ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर हमको प्राणायाम का प्रैक्टिस है तो हम लोग नॉर्मली वी कैन ट्राई टू कंट्रोल द ब्रेथ। व्हेन यू कंट्रोल द ब्रेथ, द माइंड विल गेट कंट्रोल्ड। ओके, वरना हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब दिमाग गर्म हो जाता है कि सांस फूलने लगता है ऊपर नीचे, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग फिजिटी, right? And then body, you start feeling the heat in the body. That's because you're not breathing properly. Okay, this is the most common rule, like in any kind of self-help book, anything they say कि जब गुस्सा आता है, just count till 10. Correct? Why? So that you can breathe and you can calm down, right? So these are some of the benefits of breath. And definitely those of people who are suffering from migraine, if you practice these few things, you will definitely see at least the intensity धीरे धीरे कम होगा। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे योगा में it's a integrated way of living. Yoga is a way of living. तो इसमें हम लोग फूड पैटर्न चेंज करते हैं, ईटिंग हैबिट्स चेंज करते हैं, घर में जैसे चीजें रखते हैं एनर्जी, तो उसको चेंज करते हैं। देन you know all of these things will work slowly. It's not a magic pill. ठीक है, and if somebody tells you that
then please don't believe them. Okay, so this is all for it for now. So I will be happy to take any questions or hear any feedback. आपको कैसा लगा session? So thank you, Varsha ji, for that wonderful session that we had with the Khyaal community. And definitely हमारे Khyaal community के members ये use कर सकते हैं जब उन्हें कोई migraine या headache की problem हो तो. अब हम थोड़े questions ले सकते हैं. If our members have any questions, अगर आपको कोई doubts है या आपको कोई clarification चाहिए वर्षा जी से about today's yoga, तो you can raise your hand or you can also put it in the chat and we will take your question. So first question is from Sushil ji. So namaste Sushil ji, a very good evening. गुड इवनिंग विकास जी. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जी. ये माइग्रेन के लिए जो नॉर्मल सूर्य नमस्कार है, कैन इट बी हेल्पफुल? Definitely. So Surya Namaskar में हम लोग क्या करते हैं? We do different asanas which stretches the body, which improves again the blood circulation in the body, the oxygenation in the body. क्योंकि हर आसन के संग एक breath involved है. And in general, मैं बता दूं आपको कि movement करने से, body को active रखने से हमारा aura जो है, body का energy जो है, वो clean रहता है. So that helps with actually any illness. सबको करना चाहिए सूर्य नमस्कार. Unless you have any, even though people who have knee pain or back pain, हम लोग उनके लिए भी चेयर के संग सूर्य नमस्कार सिखाते हैं. स्पेशली ये जो भुजंगासन होता है, उसमें Yes. हम डीप ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसमें भी रिदमिक ब्रीदिंग आप कर सकते हैं. उसका मेन जब कंटिन्यूस सूर्य नमस्कार में उसमें इनहेलेशन होता है, लेकिन अगर आप उसी आसना में देर तक हैं तो यू कैन डू नॉर्मल ब्रीदिंग. Breathe in, breathe out. I see. If we have got knee problems, can we do Surya Namaskar by putting on the knee pads? You can do it, but I would recommend कि आप carefully करें कि नी का mobility को ध्यान रखते हुए, वरना आप पहले शुरू करें चेयर सूर्य नमस्कार से and then progress. जब नी थोड़ा सा better हो जाए उससे, then you can progress to. नहीं, क्योंकि मैं नी कैप से brisk walk भी करता हूँ और there is no problem. तो इसीलिए Yes, it is advisable actually to use your knee as a normal joint. अगर आपको knee pad पहन के पेन नहीं हो रहा है 90 डिग्रीज बेंड करते हुए, तो आप डेफिनेटली सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सुशील जी. ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई पेन है या यू हैव गॉन थ्रू अ रीसेंट सर्जरी और यू हैव अ क्रॉनिक इश्यू एनीवेयर, तो वी डेफिनेटली गो अहेड एंड वर्षा जी हैज प्लान्ड दिस एंटायर सेशन फॉर सीनियर्स. तो खास करके looking at the amount of mobility the elders have, we have gone ahead and planned it. But अगर आपको कभी लगता है ये थोड़ा uncomfortable है या आपको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, तो you should not do it. Or you can also, and in fact you can also go ahead and check with your treating doctor if there's any particular kind of muscle movement that you're not allowed to do, or too much of exercise is not good for you. You can definitely go ahead and check that with your doctor. But we have specifically planned, this has been curated by VS Wellness, especially for the Khyaal community members who are 55 years and above. And we hope that, even if you don't have enough of mobility, आज आपके पास इतना mobility नहीं है, आप अगर थोड़ा वर्षा जी के सेशंस देखेंगे हमारे YouTube चैनल पे, जो इतने सारे सेशंस है, और किसी ने मुझे वहां पे पूछा भी है चैट में कि आई साइट के लिए उनको एक योगा का सेशन चाहिए, तो वो भी सेशन हमने किया है थोड़े महीनों पहले, एंड इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल. और अगर आप ये सेशंस करते रहेंगे, जब भी आपको टाइम मिलेगा, तो डेफिनेटली योर हेल्थ, योर मोबिलिटी, योर वेलनेस विल डेफिनेटली improve. I will take the other question from Renu ji after this, and then Kanchan ji. That would be the last question for today. But अगर आपको कोई doubts, questions है, you can definitely give it to us. We will pass it on to Varsha ji, and she and her team will definitely be more than happy to go ahead and answer that at any point of time in the future. So Renu ji, I'll take your question now. Namaste Renu ji, good evening. Namaste. Looks Namaste. like you're there for your evening walk after the yoga Yes, already. I am on the walk. I am watching it. That's great.
I wanted to tell her कि I had a operation right now, TLH, total hysterectomy. After that, I have developed BP. Okay. So I cannot walk, brisk walk. I am walking slowly. So breathless, normal breath नहीं होता है इस तरह से, सांस फूलता है basically. इन चीजों को मैनेज करने के लिए सुबह योगा कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, बट फिर भी वॉक नहीं कर सकती, पैर दर्द होते हैं, सब कुछ होता है. Correct. So usually जब when you're given have you got a hysterectomy done? Yes. Hysterectomy In September. Yeah. Okay, fine. So usually what happens is bloated. Yeah. So in general, when you get any surgery done, they, as per yoga, at least as per the books, we don't advise any exercise. Like a proper yoga routine for the next 6 months. Okay, at least 3 months, you can actually take it easy. Because allow the body some time to heal. कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमको, क्योंकि हमारा body has the capacity to naturally heal itself. So allow the body to heal. You can do a few gentle pranayam, gentle movements, no problem. And also what happens is the medicines that are given, they have a lot of tend to have a lot of side effects. We all know this. In fact, any good doctor will also tell you that most allopathy medicines or any other medicines, they will have some effect on the other body parts. Slowly, as your medicines also taper down, the body will come back to normal. So there's no need to ever hurry with the feeling कि मेरे को वापस जाना है. Yeah. बीपी हो गया ना, उस वजह से सांस भी फूलने लग गया है. Yeah. तो आप थोड़ा टाइम दें उसको, 3-4. You said last September? Yes, September. Okay, so now you've finished a fair amount of time. In fact, we have done a session on BP on YouTube. It's there, so you can refer to that session. Yeah, so there are certain asanas. So agar last September hua hai, then it's been a sufficient time. You can start practicing that. Basically, I feel uneasy while walking. I can't walk brisk walking. I feel bloated, like before. heavy. Stomach area is very heavy. Right. So hysterectomy is definitely, it's a surgery where, when the uterus gets removed, there are a lot of hormonal changes, because the body has to cope up with that feeling of, a main part of the femininity has, it takes away. So a lot of hormonal changes happen. It's very normal. Don't worry about the BP, whatever doctors given you the medication, please continue it. Uske saath aap yoga kariye, or you'll see that the medicine is being tapered down. Right. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Renuji. Thank you very much. And Renuji, it's also great to see you, concentrate on your health and on your well-being. आप फिर भी चल रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर्स को कि देखिए, आप अगर कोशिश भी करते हैं and you reach 50% of your goal, it is better than doing nothing. बहुत लोग सोचते हैं और कुछ करते नहीं. आप इस प्रोग्राम पे आए हैं, आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं इसके बारे में, और आप थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं, which is much better than people who don't do any exercise. So a big congratulations to all of you, and we hope that you keep yourself healthy just like this, and keep on watching the Khyaal community programs which are just specifically made for elders and for seniors. इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ कंचन जी का. Namaste, Kanchan ji. I'm not able to unmute you right now, Kanchan ji. So maybe you can go ahead and put your question in the chat, or we will try to take it later, right? So Vikas, I'll just quickly finish off some questions in the session. Yeah, so I think Veena ji has asked, Sukhasan mein baithna mushkil hota hai, so what can I do? So Veena ji, what you can do is you just have to, by the bed, agar aap bed pe baithe hain ya sofa pe baithe hain, तो do सुखासन with one leg. एक पैर आप मोड़े और एक पैर को नीचे रखें. तो आप ऐसे बैठने की आदत करें, फिर थोड़ी देर बाद आप shift the other leg. So this everybody can sit. You should be able to sit like this easily. और फिर धीरे धीरे करके you can start bending this leg. There are a lot of other exercises in the videos which are there for yoga for the legs and all that. So you can start doing those. For example, if you do this practice, or if you do this, stand like this for some time, धीरे धीरे ऐसे करके आपको आदत हो जाएगी.
बट ये एक्सरसाइज आपको रोज करना है, तो रोज करेंगे तो तब जाके 1 महीने के बाद आपको फर्क दिखेगा. And somebody had asked, did we do Bastrikasan? No, we did not do Bastrikasan today. Bastrika pranayam is slightly different. We have done it in previous sessions. Then if there was anything else, yoga for eyesight, we have covered this before, but there is a lot in yoga for eyes. Maybe we'll cover another session, Vikas, sometime. We'll need another 2 sessions maybe if we do yoga for eyes. Part 1, 2, 3. Okay, so I think, yeah, that's about it. Yes, Sylvia ji. So Ujjayi Pranayam can be done sitting, standing, walking, maybe not, but with asanas, you can do it. Okay, all right. Yeah, I think we've covered everything. Sure. Thank you so much, everyone. Lovely to see your spirit. Thank you, Vikas, for organizing. Thank you, Varshana ji, for coming here every week and, showing us the right poses, the right asanas, and the right, kind of yoga to be done, especially for seniors and elders. So I would just like to make a short announcement that kal subha 8 baje, we have a very special session also. As you know, we are also exploring different things for seniors and elders. तो कल सुबह हम नाड़ा योगा करने वाले हैं और नाड़ा योगा अगर आप देखोगे तो it is yoga through sounds. So we have a Swapnil Gavde who's going to come, and he's a yoga instructor and he does nada yoga. तो sound के through हम कैसे योगा कर सकते हैं वो हमें explore करके दिखाने वाले हैं. So you can join tomorrow morning from 8 a.m. to 9 a.m. From your Khyaal app, and we will definitely like to explore this with the Khyaal community for the first time. So thank you, everyone. I hope you enjoyed this session. We will also have a recording of this on our YouTube channel very soon, so you can definitely go ahead and see it. और जैसे वर्षा जी ने कहा कि आपको ये रोज करना पड़ेगा क्योंकि we just do it once and then we forget about it. But if you have any particular problem, so for every problem and issue, we have Varsha ji who has gone ahead and made a separate session. So if you have, for example, we spoke about headache and migraine today. We have a specific session on eyesight. We have a specific session on knee pain. We have a specific session which has been recorded and put on our YouTube channel even for backache. So अलग-अलग जो problems है normally which is faced by elders and seniors, वो सब problems के sessions हमने हमारे YouTube channel पे record करके डाले हैं, तो आप कभी भी उसे जाके देख सकते हैं. So thank you everyone and have a great evening. I hope to see all of you tomorrow morning. और another very important announcement कि अगर कल आपको ख्याल कम्युनिटी के साथ तंबोला खेलना है तो आज रात को 9 बजे के पहले आपको अपने ऐप में जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, तभी आपको कल सुबह 9 और 12 के बीच में आपकी टिकट मिलेगी और आप 5 बजे हमें ख्याल तंबोला के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. So thank you everyone and have a great evening. Goodbye.